Welcome to page number 19 of your textbook, The First Flight. This is second chapter and the second segment in the interpretation part. Let's start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, after some time, we all lifted our eyes in awe means we just had a view of a surprise as a spectacular array of South African jets. Spectacular, very beautiful or impressive array formation. You might have seen some aircraft formation, especially on 26 January or on 15th August or on 8th October, Air Force Day. This is the same thing. Formation flying of fighters. Spectacular array of South African jets means a beautiful formation of South African fighters, helicopters and troop carriers. Troop carriers means the military cargo, troop, military, or you can say related to your defense. Troop carriers, defense cargo aircraft rode in perfect formation means they pass over in perfect formation over the Union buildings. Union buildings means that particular building in South Africa, especially in Pretoria, where this inauguration was taking place. It was not only a display of pinpoint precision and military force. It was not a display of pinpoint precision, means it was no doubt in that was a very well planned military exercise, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. But demonstration means to show something, to exhibit something, exhibit, exhibit something. But a demonstration of the military's loyalty to democracy. But it was also the military's loyalty. Loyalty means to be loyal to somebody, किसी के प्रति वफादार होना. That was the loyalty indicator, or means they were showing their full dedication towards the democracy to a new government that had been freely and fairly elected, and that was their loyalty to that newly elected government. Only few moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with the ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only few moments before, before some time, the highest generals of the South African Defence Force and police, means the senior police and defense officers, their chest bedecked. Bedecked means decorated. B-E-D-E-C-K-E-D. Decorated. Hindi mein I have written on by the side of this one, Alankrit. Their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, means they have the full ribbons and other things just on their chest, medals from the days gone by, saluted me. They saluted me and pledged their loyalty, and they conveyed their loyalty to me. उन्होंने अपनी वफादारी मेरे प्रति व्यक्त की. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful of the fact. Not unmindful of means I am fully aware of. मैं उन चीज़ों को भूला नहीं था. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Before some time they would not have saluted me. उन्होंने मेरे को सैल्यूट नहीं किया होता, बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया होता. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag.
Lastly, a chevron of impala. Chevron होता है बेटा V formation. Once you draw victory sign by your fingers, that is, and if you draw and on a paper, especially with the 2-3 V's, one below this first one, that is called chevron. Chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. These are the colors which are there in the South African flag. So different, you might have seen there again on the 26th January, the jets emit 3 colors in the sky: saffron, white and green. That is tricolor of India. So those fighters releases these 3 colors, especially on your 26th January. So in the same way, there was a chevron of, there was a V formation of Impala jets. Impala is a type of aircraft. Impala fighters that left the smoke trail. Trail means a line. Line, L-I-N-E, line of the black, red, green, blue and gold color. That was the symbol of New South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems, and this was a very special day for me because it was being there were 2 anthems. Anthems वैसे होता है गान. National anthems were being sung, and the vision of the white singing Nkosi Sikelel', I Africa. This is the national anthem of white people, and the black singing Die Stam, the old anthem of the Republic. And this was also being sung. The black was singing Die Stam. And this is also one version of the black people. वहाँ 2 टाइप के लोग थे जब साउथ अफ्रीका फ्री हुआ. एक गोरे लोग थे जो ऑलरेडी वहाँ पे मीन्स जो आए थे अंग्रेज़ लोग वहाँ पे शासन करने के लिए और जो बस गए थे, और एक वो लोग थे जो वहाँ के मूल निवासी थे. सो किसी को भी ये नहीं बोला गया मंडेला के द्वारा कि आप यहाँ से चले जाइए. यहाँ जो रहना चाहता है, ये राष्ट्र सब के लिए है और सभी इस राष्ट्र के नागरिक हैं. तो 2 नेशनल एंथम उस दिन गाए गए. जो वाइट पीपल्स का था वो वाइट के लिए, और जो ब्लैक थे उनके लिए डाई स्टम गाया गया. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, of course, no one was conversant. Neither group knew the lyrics. Lyrics means the song. No one was aware of the singing pattern of the anthem. Once they despised. Despise means hate, जिससे वो नफरत करते थे. गोरे वाले काले वालों के उससे नफरत करते थे, काले वाले गोरे वालों से नफरत करते थे. They would soon know the words by heart. Words by heart, know by heart means know it in a very well versed way. किसी चीज़ को अच्छी तरह से जो है by heart means अच्छी तरह से सीख लेना. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. This is quite important paragraph for you, mind it, because you will most probably you may find this one in your comprehension passage. So throughout the years, the chances of these paragraphs are very high coming in comprehension. So pay attention to this. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Means on that inauguration day I was overwhelmed. Overwhelmed means you can say I was very excited with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War. Boer is a place in South Africa, and Anglo means people related, or the people, or the things related to England. Anglo-Boer War means I had not forgotten. In the first decade of the 20th century means in the first 10 years of the 20th century, we are in the 21st century, mind it now. In 2020, we are in 21st century. So century runs one ahead of your year.
In the first decade of the 20th century, so for the first 10 years of the 20th century, a few years after the bitter means very hard, very big, Anglo-Boer War के बाद, and before my own birth also, white-skinned people of South Africa, mind it, he has used peoples over here. This one, peoples. Actually, there is no plural form of people. People itself is a plural, but when you study this thing, you must take into consideration that there are certain things, they are acceptable in the writing format. Before my own birth, white-skinned people of South Africa, means the British people of the South African origin, patched up their differences. Patched up means compromised their differences. Differences means when you have something opposite to someone, and erected it. Erected means to install, to build, and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Of course, this is a difficult one. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences. जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक तरह से patched up their differences, एक तरह से समझौता टाइप कर लिया था, and erected a system of racial domination. परंतु उन्होंने जातिवाद का एक सिस्टम खड़ा कर दिया था against the dark skinned peoples of their own land, वहीं के लोगों के खिलाफ. मीन्स वो लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, परंतु उनके मन में एक बहुत ज़बरदस्त, गोरे लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त टाइप का अपने मन में बैठा लिया था काले लोगों के खिलाफ. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known. और जिस टाइप का उन्होंने सिस्टम शुरू किया, the structure they created, structure means anything which you form, the structure they created formed the basis of the one of the harshest, means the things they just created form the basis of one of the harshest. Harshest means सबसे कठोरतम, most inhumane, अमानवीय societies the world has ever known. दुनिया के इतिहास में शायद आज तक इस तरह का सबसे कठोरतम या सबसे अमानवीय जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया शायद आज तक नहीं मिलेगा. Now, in the last decade of the 20th century, अब जब ये 20th century का लास्ट डिकेड, लास्ट दशक चल रहा है, एंड माई ओन 18th decade as a man, और जब मैं लगभग not 18th, this is the 8th one, 8th decade as a man, और जब मैं अपनी ज़िंदगी के 8वें दशक में लगभग 80 के करीब जो है चल रहा हूँ, then system had been, let me change the page. We are on page number, this is your page number 20 now. That system had been overturned forever. Overturned means abolished. उसको पलट दिया गया है, toppled, T-O-P-P-L-E-D, overturned forever, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their color of their skin. उन सारी चीज़ों को बदल दिया गया और उनके अधिकार overturned forever means सदा के लिए, and replaced by one, और एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया गया that recognize the rights and freedoms of all people, जो सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देता है regardless of the color of their skin, चाहे उनकी त्वचा मीन्स या शरीर का रंग कुछ भी क्यों ना हो. कहने का मतलब ये है कि और जो अंग्रेज़ों के बनाए वो थे उनको समाप्त करके एक नए सिस्टम को खड़ा किया गया जिसमें सभी रंग या यूँ कहिए कि सभी
लोगों के समान अधिकार और स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया, चाहे उनके शरीर का रंग कुछ भी क्यों ना हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come about, ये जो दिन है, had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. Unimaginable, that cannot be imagined, जिस पे विश्वास जिसकी यूं कहिए कि अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। Sacrifices means what you sacrifice, बलिदान। of thousands of my people, आज का ये दिन है, ये हमारे हज़ारों लोगों के sacrifice के कारण आया है। whose sufferings and courage can never be counted or repaid, जिनकी sufferings को और courage को उनको counted means उसकी गणना नहीं की जा सकती, and repaid और हम उनको लौटा नहीं सकते। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply a sum of all those African patriots who had gone before me. I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, means actually नेल्सन मंडेला इसको लिख रहा है बाद में, और ये चीज़ जो घटित हो रही है उस दिन को याद करता है। मीन्स द इनॉग्रेशन डे, ऑन द इनॉग्रेशन डे व्हाट ही वाज फीलिंग इज राइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन के लिए वो लिख रहा है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply a sum of all those African patriots. और उस दिन मैंने ये महसूस किया, और दूसरे दिनों पे भी मैं ये महसूस करता था कि मैं simply a sum of all those African patriots, कि मैं उन सभी जो अफ्रीका की धरती के यूँ कहिए पैट्रियट, देशभक्त थे, had gone before me, मैं उन सब का एक जोड़ टाइप था। मतलब कहने का मतलब यह है कि उन लोगों का की शक्ति का ही मैं एक नमूना टाइप था जो मेरे से पहले चले गई। That long and noble line ended and now begin again with me. और वो लॉन्ग, लंबी और नोबल, योग्य लाइन एंडेड, वो ख़त्म हो गई है, वो लंबी और योग्य लाइन ख़त्म हो गई है। मीन्स वो लोग चले गए हैं और अब मेरे से इसकी नई शुरुआत होती है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे दुख था उस दिन कि मैं उनको उनका धन्यवाद नहीं दे पा रहा था, और ना ही वो इस चीज़ को देखने के लिए आज यहाँ पर हैं। What their sacrifices had wrought, कि उनके sacrifices ने किस चीज़ का निर्माण कर दिया है। मीन्स जो उन्होंने sacrifice किए उसका क्या ultimate result है। wrought, W-R-O-U-G-H-T, wrought means this is the past participle of work made, स्पेशली किसी चीज़ का, या टू अचीव, कि उन्होंने कौन सी चीज़ प्राप्त कर ली है। आज वो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर नहीं है और ना ही मैं उनको धन्यवाद कर सकता। मुझे बड़ा दुख है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने, The policy of apartheid, रंग भेद की नीति ने created a deep and lasting wound, उसने बहुत गहरा और काफ़ी दिनों तक, deep गहरा, lasting बहुत दिनों तक, wound in my country and my people, एक बहुत गहरा और लंबा घाव दिया है मेरे लोगों को। All of us will spend many years, हमें बहुत साल लगेंगे, if not generations, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर नहीं लगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मीन्स बहुत साल लगेंगे हमें, अगर पीढ़ियां नहीं तो साल जरूर लगेंगे,
रिकवरिंग मीन्स टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से निजात पाना. फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मीन्स वेरी डीप, जो हमारे को ये हर्ट हुआ है, हमारे को ये चोट पहुंची है, वेरी डीप चोट. विद द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन हिंदी में दमन, ऑपरेशन मीन्स किसी पर दबाव देके हमेशा उसको अपने अधीन रखना. ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी मीन्स जुल्म जिसको बोलते हैं, of unkind behavior, had another, but the decades of oppressions and brutality had another unintended effect. हमारे ऊपर, unintended means अनचाहा सा, हमारे ऊपर बहुत जो ये ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी का इफ़ेक्ट था ये बहुत ज़्यादा रहा. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और ये इसी का रिजल्ट था कि जिसने प्रोड्यूस किए ओलिवर टैबूस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लिथलिस, द यूसुफ डाडूस, द अब्राहम फिशर, द रॉबर्ट सुबकिविस ऑफ आवर टाइम्स. एंड स्टार इज ऑल्सो बीइंग गिवन, one star is also being given, and you will just find out the definite article is being used, but that is normally not being used in front of a name, especially with a proper noun. But here those are the names which indicate something special and they show their legacy. ये नाम कुछ स्पेशल बताने के लिए किए गए हैं क्योंकि ये करेज और हीरोइज्म का प्रतीक हैं, इसलिए यहाँ पे इनके सामने. एंड यू विल जस्ट वंस यू विल गो थ्रू दिस वन, द पेज नंबर 25 using of definite article with names, that's also been given there. At the end of this chapter I'll cover certain things from there, so we will study something on page number 25 also using the definite article with names. By the time you can also just go through, there are certain things given there. Okay, at the half down of the page the things are being explained there. So let me just finish up at this point because the video will be too lengthy, and let me cover in brief what I have covered today. हिंदी में एक बार मैं बता देता हूँ इसको. Just let me cover the synopsis of this one. Okay. A few months later, we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South African jet helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union buildings. कुछ देर के बाद हमने बड़े विस्मय से आसमान की तरफ देखा जहाँ पर साउथ अफ्रीकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट सारे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में ऊपर से गुजर रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजीशंस इन द मिलिट्री फोर्स, but a demonstrations of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. ये जो आज ये करतबबाजी हो रही थी, ये नई चुनी हुई सरकार के प्रति मिलिट्री की लॉयल्टी को इंडिकेट कर रही थी. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ देर पहले ही मिलिट्री और पुलिस के जो आला अफसर्स थे उन्होंने मुझे सैल्यूट किया. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मुझे याद है कि थोड़े दिन पहले वो मुझे ज़रूर अरेस्ट कर लेते अगर मैं आज राष्ट्रपति नहीं होता इस देश का तो. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. लास्ट में एक फ्लाई पास के जरिए हमारे राष्ट्र के या राष्ट्रध्वज के कलर्स को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से डिस्प्ले किया गया. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of the white singing Nkosi Sikelel, I Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. आज दो राष्ट्रीय गान गाए गए गोरों के लिए और
एक कालों के लिए, और एक टाइम पे जो एक दूसरे से नफ़रत करते थे, वो इन चीज़ों को थोड़े ही दिन में अच्छी तरह से सीख जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. आज मुझे जो है काफ़ी मेरे अंदर बहुत कुछ विशेष हो रहा था हिस्ट्री की चीज़ों को सोच करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं शताब्दी के पहले दशक के अंदर और एंग्लो बोअर वॉर के तुरंत बाद और मेरे बर्थ से पहले दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट पीपल थे, उन्होंने सारे सिस्टम को सामने से या ऊपर से सुलझा लिया था, परंतु उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन का, जातीय वर्चस्वता का एक सिस्टम खड़ा कर लिया अंदर ही अंदर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और ये शायद मानवीय इतिहास की सबसे कठोरतम या अमानवीय एक तरह की सोसाइटीज़, समुदायों की उन्होंने रचना कर दी थी। इतने कठोर जो है वहाँ पे अंग्रेज पेश आए थे हमारे साथ। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one of the recognized their rights and freedom of all people regardless of their color of their skin. और आज के दिन जो हमने जो पुरानी प्रथा थी उसको बिल्कुल हटा दिया था और एक नए सिस्टम को, जो कि सभी लोगों को उनके रंग के अनुसार स्वतंत्रता और यूँ कहिए कि राइट्स देता था, एक हमने ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. आज का ये जो दिन था, ये बहुत ही unimaginable, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, मेरे हज़ारों लोगों के उन सैक्रिफाइसेस की वजह से था, जिनकी सफरिंग और करेज को कभी काउंट नहीं किया जा सकता या उनको वापस नहीं किया जा सकता। I felt that day, as I have on so many others, that I was simply a sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began with me. मैं अपने आप को उन हज़ारों पैट्रियट्स का एक जोड़ मानता हूँ, और जो वो चले गए हैं उनके बाद अब मेरी बारी थी कि मेरे से ये लाइन जो है दोबारा से शुरू हो। I was pained, मुझे बड़ा दुख था, that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. मुझे बड़ा दुख था कि मैं उनको थैंक्स नहीं कह पा रहा था, और वो आज के दिन उस चीज़ को देखने के लिए नहीं थे इस धरती पे जो कि उनके सैक्रिफाइसेस ने अचीव किया था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound on my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश के लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। All of us will spend many years, हमारे को बहुतों साल लग जाएंगे, अगर हमें if not generations, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं लगेंगी तो हमारे को साल काफ़ी लगेंगे। Recovering from that profound hurt, उस बहुत गहरे धक्के से, but profound means very deep, total, it's a very good word for comprehension point of view. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect. Unintended means which is not deliberated, without intention. Means उन्होंने कर दिया, उनकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी अंग्रेज़ों की, बट उनसे वो हो गया। But the decades of oppression and brutality, जो दमन और जुल्म हमारे ऊपर ढाए गए, had another unintended effect. उसके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, and that was that produced, और उन्हीं की वजह से, वो जो हमारे ऊपर ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी की गई, उन्हीं की वजह से ऑलिवर टैम्बूस, वॉल्टर सिस्लस, चीफ
लिथिलस, यूसुफ डैडूस, ब्राहम फिशर, द रॉबर्ट सुकूस ऑफ आर टाइम, ये महान कुछ पैट्रियट्स पैदा हुए जिन्होंने जो है, जैसे हिंदुस्तान के इतिहास में आपका नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई, देन ये जितने भी हैं, तात्या टोपे हैं, शिवाजी हैं, देन आपके ये मॉडर्न थे जितने भी, जिसमें भगत सिंह हैं, आपके चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये बिस्मिल्लाह हैं, ये जितने भी हैं, सुखदेव, राजगुरु, ओके, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो इसी तरह से ये भी जो है साउथ अफ्रीकन सोल के जो है सॉइल के पैट्रियट्स हुए हैं। दीज आर द फोटोग्राफ्स डाउन बिलो, you can just go through them. And one thing more over here, that use of definite article is being shown before a proper noun on page number 25. You just go through by them by the time I reach to the end of the chapter. Okay, with this I finish this session and I'll be back very soon. Have a nice day.